कई तरह की प्रोफेसर सोमनाथ प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, उसको लेकर गंगा की पर अगर चर्चा करें तो वहां भी काफी दिक्कतें आती हैं, या दूसरे राज्यों की भी हम बात करें कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अब जो लोग वो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं दबंग टाइप के होते हैं। अब ये भी लॉ एंड ऑर्डर की भी वहां इश्यू आ जाता है। तो अगर ऐसी कोई फॉर्मूला डिवाइस कर लिया जाए, जिस तरह की आप पॉलिसी लेवल पर बात कर रहे हैं, कि क्योंकि जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हो सकता है उनको भी कई तरह के चैलेंजेस आते हो इनके इम्प्लीमेंटेशन में, कि किस तरह के वो लोग हैं जो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं और कुछ उसमें कचरा डाल रहे हैं। लोकल लेवल पर आप कहाँ तक इस तरह के दबंग लोगों के पीछे जाएंगे, तो ये भी एक प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं। तो ऐसे में क्या जो आप बात कर रहे थे कि जीएसटी से जो हैज रिपील्ड द सेस पेड बाय इंडस्ट्रीज फॉर वाटर यूज एंड इट नीड्स टू बी करेक्टेड, व्हाट सॉर्ट ऑफ करेक्शंस डू यू थिंक शुड टेक प्लेस? एक चीज तो है कि मैं दो पहलू बताऊंगा। एक, लुकिंग एट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वहां पे ये है कि ओके, आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे दबंग टाइप के लोग हैं जिसको कंट्रोल करना फ्रॉम अ लीगल सिस्टम इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट, बट दिस इज वेयर सोशल मीडिया एंड दिस इज वेयर यूथ कैन कम इन. So naming and shaming of industries is something that is quite possible these days, and that actually hurts. So if an industry is doing something wrong, I think in the long run or even in the medium run, it is going to face a lot of difficulty if it is not getting the right kind of image, if it is not creating the right kind of image. So that's certainly something that can be done by the people. Coming to the legal part of it and coming to the regulatory part of it, yes, it is a question, as I was mentioning. So if there are situations of common effluent treatment plant where there are small industries which can actually offload their waste of a certain quantity and quality by paying a certain amount of tipping fee, and that is a fee that is provided to ensure that their waste is taken care of. So that is something that can be made much more systematic and actually encouraged. So okay, we are not getting the cess right now, okay, but there can be other methods by which the externalities, as we say in environmental economics, can be internalized into the economy. So what is the value of the nuisance that you are creating? So that value, even after maybe complete treatment, there should be a certain value attached to it. That is a value that has to be given to society. And it is not just the corporate social responsibility like thing, but it is something which goes beyond that. And therefore, it is something that the companies need to be aware that they have a responsibility while taking in inputs like clean water. It cannot come free. So that's the price to be paid for that. And if they are sending out wastewater, that is also cannot be free. There has to be a price attached to it. So there has to be a certain amount of money that has to be allocated for both. And this is the business change that is required. And maybe there is a graded system where small industries pay a small amount, medium industries and large industry pay a consecutively larger amount, maybe because of the quantity and quality of the resources that is taken in and thrown out. So it's possible.